Good morning, everyone. Thank you for joining. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. So, guys, again, there is Good a morning, news sir. about. Good morning, everyone. The reason we focus, I think Sean wants to talk about Asian Paints. He wants to go for office. Sean, you can start with the news and then. Sean, are you there? I think he is busy. Okay. Okay, Bharat, will you start with your Chalet Hotel news? Yes, sir. Good morning, everyone. Today we'll be talking about the Chalet Hotels. Chalet Hotels plans to open a 300-key luxury hotel in Hyderabad. Yesterday, management has approved a development of 300 keys and hotel and with a 336,255 square feet commercial space of Ritz-Carlton Hotel in Hyderabad with a capacity of 6.3 billion. The project is expected to complete within 36 months since the start of construction. Currently, the Hyderabad accounts for 20% of total revenue, and this hotel is the third luxury hotel of Charlotte Hotels in Hyderabad. With the rising corporate travel and the GCC expansion in Hyderabad, the demand is likely to rise in with these hotels, and the contribution of Hyderabad is expected to increase for in future. Thank you. Correct. It was the only news. So many things about it. Luxury hotel. Where is the data points? Sir? It was so big news. You just ended in few lines. Okay, Ashutosh, will you? Yes, sir. Yeah. Yeah. So I'm going to be speaking about Chalet Hotels. So Chalet is placing a big bet on the Hyderabad market with an investment of 9,300 million to bring the Ritz-Carlton to the city. So this hotel will be developed under a long-term lease model by converting an existing mixed-use asset into a ultra-luxury hotel, making Chalet's move into the very top end of hospitality. Now, this isn't some random move. Hyderabad already contributes 21% of Chalet's hospitality revenues of Q3 FY26, making it the company's second largest market. Now, the demand backdrop remains quite strong, and the demand is driven by tech expansion, GCC growth, and steady corporate travel. And what's particularly noticeable is the pricing power. So in the others, like Hyderabad market is the part of the cluster which delivered 16% year-on-year RevPAR growth in Q3 FY26. And more importantly, this was largely ADR-led growth. And I've gone through the HVS Anurag Hospitality report of January, and the Hyderabad ARR has risen sharply around 22 to 24% over Q4 calendar year 2024, and further strengthening to 25 to 27% in the last quarter. So today, Chalet operates 595 keys across two Western properties in high-tech corridor. The Western Hyderabad high-tech city commands a strong ARR of about 25 to 30,000, while the Western Hyderabad Mindspace operates in the range of 15 to 20K. And with the addition of 330 rooms Ritz-Carlton, Chalet will significantly scale its premium presence in the city. Now, if we talk about the competitors, in the luxury segment, it is quite concentrated. IHCL has about 4 properties with 658 keys. ITC operates one hotel with 274 rooms, and EIH operates one hotel under Trident. But they are coming up with Oberoi Hyderabad with a 220 key, and it is going to be operational by 2029, which will expand ultra luxury supply meaningfully.
So, in conclusion, I would say the competitive intensity will rise, but with strong corporate demand, sustained growth, and high pricing power, Hyderabad is clearly emerging as a structural luxury micro market, and Charlotte is positioning itself to benefit from this in the coming future. Thank you. Okay. Okay, fine. So again, part of luxury hotels being developed in Hyderabad. So Hyderabad was not having a premium hotel. इसका ARR कितना है? Any idea, Ashish? ARR? Sir, for किसका? Is Ritz-Carlton का? Ritz-Carlton, I don't have any idea because there are only two Ritz-Carlton in India as of now. So one is in Bangalore and the other one is in Pune. That's Okay. वो बहुत एकदम high end पे है. Ritz-Carlton is one which is quite expensive. Okay. Yeah. So again, apart from tourism that they are putting so that much of money. So Hyderabad is a growing market. So Pune में एक है Ritz-Carlton which is next to the corporate hub. Probably वही, as I said, my wife के जितने भी meetings होते हैं वो वहीं पे होते हैं. Probably they have a corporate tie-up and Ritz-Carlton I think is done by Vinithiv. But अभी Chalet ने भी दूसरा किया. So it's not that Pune का है वो Vinithiv चलाते हैं and I think this is now owned by Chalet. Chalet का we know it is specifically into corporate. जितने भी hotels है they are specifically into corporates में ही होते हैं. Focus Mumbai पे था, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, this was their focus and again they are expanding into. So ये tourism का part नहीं है. I will say this is something which is the corporate tourism which is growing and with India being expanding and growth happening in India, so ये basically this companies will grow. Yeah, this segment will grow rather, and they specifically mention residential be it offering or residential or commercial properties. So residential properties भी now the west वो चालिट का जो west end है मुंबई में पवई में उनके वहाँ पे कुछ apartments भी है. That is new thing which has started now. मतलब I've seen for the first time कि apartment you can stay 1 BHK 2 BHK होते हैं. पर hotel rooms नहीं होता because when you stay for longer time वो hotel rooms भी थोड़े बहुत तुमको cramped up लगने लगते हैं. And you cannot buy a suit. हर बार कोई suits काफी कम होते हैं वो presidential suits वो. So ये apartments कुछ it has increased nowadays and it has been done specifically by Charity था पहला करने वाले. मैं first time ऐसा कुछ देखा है. Yeah, residences, correct. पुणे वाले Ritz-Carlton का ARR is north of 35,000. Okay. And I'm not sure about Bangalore. Yeah, let's say follow Mindspace will be a natural progression. Yeah. So मुझे लगा ये मतलब even when I read it for the first time, Ritz-Carlton अगर select कर रहा था specifically वो corporate Madhavpur is a corporate area which is next to the high-tech city. Will be on bombshell lease through Mindspace. Hyderabad में दो थे. This is the third one. So this is probably focused towards the corporate tourism. Domestic passenger का भी था. भरत तुमने लिखा था ना ये? भरत हाँ सर. था इसमें. What is happening? Should I present, sir? Yeah, present. Hello. Domestic air traffic. According to ICRA, domestic air traffic to grow by 6 to 8% in FY 26-21. The domestic air traffic in FY 26-27 to grow by to 175 million passengers, driven by strong religious, business, and leisure tourism. In December 25, December 25, the domestic air passenger estimated from zero decreased from Bharat, you don't have to 0.6. read it. You have to present it. You have to converse. Conversation करना है, सिर्फ present नहीं करना है. Okay, sir. Conversation करो. So basically, ICRA has released a statement stating that the domestic air traffic has decreased from 4.6% to 0.3% in FY25 due to the Indico crisis and Operation Sindoor, Ah. and which is
which will be now is which will be now growing in the next financial year from to 6.8 to 8% to 175 million passengers. And Why don't there you is come all with the evening calls, Bharat? Why don't you come in the evening calls? I'm coming, sir. Yeah, yesterday you were not there. I was there in the call. No, sir, I was there in the call only. What did you do yesterday? You were there and Yes. what did you No, present? sir. No, sir. I didn't present yesterday, but I was there. Day What before did you yesterday, do? I spoke, sir. If you don't present anything or if you don't speak anything, then attending calls is not gonna help you. Okay, sir. Then I'll try to speak more frequently from now on. because if you cannot present things properly, Bharat, then there is no point whatever work you do. No one is Okay, gonna believe because presentation is the most important. You cannot present, then no point. Finance is not for you. Then it is like that. Because making okay, models sir. and making reports is of no use if you cannot present those. I'll try to present, sir. So tell I'll me, work on that. this news only. This news only. See, that is why those calls are happening on the weekend, so that in the morning you don't have a problem presenting it. Now you have a problem presenting it. If you cannot converse with your teammates, then no one will listen to you. Yes, sir. Then tell again, what is this domestic air passengers to grow 6 to 8%? Why? Because the increase in religious, business, and leisure tourism, sir. That's it. Stop. Okay. Now, In last year, it it has been affected due to the Indigo crisis and Operation Sindoor. passengers. Fine. Now, done. Sri Lanka Airlines has plans to launch a direct flight from Ahmedabad to Colombo, sir. Currently, Hmm. currently India has two direct flights, which is from Delhi and Mumbai. Okay. So this, so with the accom Accommodating 531,000 Indian tourists in yes, FY sir, 25. accommodating around 531,000 Indian Uh, tourists in FY25. With the yeah. launch of uh, the, with the launch of direct flights from Ahmedabad to Sri Lanka, the travel time can be decreased by 1 hour compared to Delhi. Currently, in Ahmedabad, there are two branded companies which operate, which is Hmm. Leela as a operational hotel in Gandhinagar with 318 keys, which is 21 kilometers away from Ahmedabad International Airport. And IHCL operates across five segments, which Okay. includes Taj Skyline with 308 keys, Vivanta with 178 keys, and three Ginger hotels, which are with 44 keys, 105 keys, and 93 keys. No, Bharat, be clear. Leela has operations, has hotels in Ahmedabad. Sorry, Leela has one hotel in Ahmedabad at Gandhinagar, which Which is having 318 keys. is IHCL has five operational hotels across all the segment, which includes Tata Skyline, which has Alan 308 Ks, Vivanta, which has 178 Ks, Ginger, Jin- which has 93 Ks, Ginger Vatrapur has 93 Ks, Ginger Ahmedabad has 44 Ks, and Ginger RTO Circle has 105 Ks, which is just away 10 to 15 kilometers from the airports. That's it. How am I presenting? The same news that you have written, I'm presenting. yes, Why sir. you are not able to present? Everything that you write is not to be presented. Okay, You sir. have to format it. मैम बोलती है ना करो वो प्रैक्टिस करो मिरर के सामने बात करने का हाँ, sir. if you are not confident about speaking you have to do it and then only you speak डायरेक्टली आके करोगे ऐसा ना तो it will create a huge problem मतलब इतना अच्छा लिखने के बावजूद भी आई एम नाउ टेलिंग यू कि तुमने कुछ किया नहीं है काम ऐसा होता है the more better you present even if you
do less thing, but if you can present it in a proper way, probably it shows that you have done something. वरना तुम कितना भी काम करो ऐसा लगेगा कॉपी पेस्ट ही किया तुमने सब, जबकि तुमने किया नहीं है वो. सर प्रैक्टिस करूंगा सर. हाँ, you have to do it, ना I'll भरत, try to वरना it's been a yes high sir. time now. I'll You're doing yes sir. all the tasks, probably. So that is why, and why are you not consistent? Where were you yesterday? Where were you day before yesterday? I have joined sir, but through YouTube I was not able to. I was some outside doing some other You see, work sir. joining is different and presenting is different. Only Yes sir. joining is not going to help you. I'll be more consistent from now on sir. It's just about not reading newspapers in the morning. Yes sir. Okay, Sean, you have anything about Asian Winds? Sean? Sir, I will go next. Just ask someone else to do it. Okay. Okay, Aniket, anything on the salary end? What was this news? Yeah, sir. So, good morning, everyone. Like, as you know, like our per capita income is increasing, and which is supported by this salary hike, which is estimated to increase 9.1% for this, you can say the calendar year 26. And I'll be linking and I'll be walking you through like how this will benefit our luxury tourism sector and what all companies are there in that particular domain. So, like starting, like as you know, like our per capita income will is projected to increase $4,000 per person, which is currently at around 2,800 US dollars. This increase is, you can say, an 8% increase, which will be happening in next 4 to 5 years. This is supported by mainly two things. First is our GDP growth, which is the major tailwind. Our nominal GDP is expected to increase around 12%. And again, linking to this particular article, this is supported by this salary hike, which is happening and is expected to increase by 9.1%, which is a slight increase, 8.9%, which was in previous year. But again, like a slight increase will also benefit a lot to our overall premiumization trend. If we link this to our luxury hotel demand and supply dynamics, the demand is increasing by you can say a multifold 1.5 times, whereas supply is just increasing by 2 to 3%. This will again benefit our hotel industry supply, you can say the operational metrics. This will add to their ARR, that is the room rates, which will increase their RevPAR growth and ultimately drive the occupancy. If we see this trend is supported across the sector, like around 45 industries and across 1,400 organizations. So now talking about the stocks, like which all stocks are there in this luxury, you can say the tourism. IHCL has around 32,200 keys, which is the iconic luxury leader in our tourism market. Then EIH operates under Oberoi Group, Oberoi brand, and operates around 5,000 keys roughly. ITC, on the other hand, is supported by their mid and the luxury room supply, and they are standing at around 13,000 rooms. Leela has a smaller base with around 3,000 rooms, which is a pure play luxury chain. And Ventip, which is an emerging player, operates under JW Marriott and the Marriott Bonvoy Group, and also the Ritz-Carlton, which is roughly at around standing around 2,200 rooms. So concluding this article and all these data points, which shows like the trend is supported by rising incomes, the premiumization trend, per capita income is increasing, which is supported by salary hikes, and demand is also sustaining by rising ARR and the occupancy, which can be a good opportunity for us to look in this luxury tourism market. Okay. Yeah, good. You can link this that if the salaries are increasing,
Rated to rise 9%. So that's almost a 1% increase from the average rate of 7 to 8%. And per capita income increasing. To support that, there's one more news about the spending. ये मैं यहाँ इस पे भी आया था in the Mint that Gen Zs and millennials power India's rapid growth cycle. They have talked about consumers, kitchen appliances, consumer electronics, furniture entering a new phase. Upgrade and switch. Consumers goods across categories have been replaced by young and especially by young salaried professionals in urban centers. Way to support that news, ये भी था that millennials, मतलब in the 90s and Gen Zs obviously in the 2000s probably are the ones who are spending too much on luxury products. यहाँ पे Ethos का भी नाम आया है. Ethos is a luxury brand for watches. So yes, people are spending. And with the increasing salaries and increasing spending power, all the premiumization, all the premium products are increasing. So मेरा ये कब से था that we talk only about premium products, premium services. जितना तुम premium services पे focus करते हो, aspirational buying, which will help where the demand is coming from. So it's in cars, it's in probably high end. अभी cars में भी तुम देखोगे तो top end गाड़ियां ज़्यादा बिकती है. Nowadays the trend is seen that the automatic cars are sold more than the normal manual cars. An automatic car usually top end की ही कार होती है. कल भी एक न्यूज था that credit card spending have increased multi-fold. So all see इसमें FMCG भी आया, consumer durables भी आए, and या hotel भी एक आता है. Wherever you think, wherever you spend your money. So जब तुम कोई कंपनी तुम पैसा स्पेंड कर रहे हो तो ये भी सोचना that is this a growth opportunity. तुम जहाँ पे भी पैसा स्पेंड कर रहे हो आज, मतलब मैं रिसर्च ऐसे ही करता हूँ. आई स्पेसिफिकली डू दैट हाउ टू फाइंड कंपनीज. अरे यहाँ पे रिसर्च, यहाँ पे ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है, यहाँ पे मैं खुद ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ. B2B बिजनेस आई अवॉइड एट टाइम्स इज जस्ट बिकॉज वो समझता नहीं है कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं, कौन बाय करते हैं. बट हाँ, प्रोडक्ट विच आर B2C, आई हैव ह्यूज रिसर्च ऑन दैट कि पैसे अभी ज्यादा स्पेंड कहाँ पे हो रहे हैं. तो आई से ट्रैवलिंग, मेरा अभी ज्यादा से ज्यादा ट्रैवलिंग ही हो रहा है. आई स्पेंड मच ऑन ट्रैवलिंग. बाकी मुझे ज्यादा चीजों का शौक है नहीं. ट्रैवलिंग एज एन नॉट फॉर द लीजर, नहीं टू ये मेरा ऑफिस के काम से जो ट्रैवल होता है उतना ही. बट आई सी पीपल स्पेंडिंग इट अराउंड मी. तुम भी देखो तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं. व्हाट आर टॉकिंग न्यू थिंग्स अबाउट. वो धुरंधर का पता है, इट हैज रीच्ड ऑल रिकॉर्ड्स. तो PVR का भी नाम था. हर एक फ्रेंड को मुझे सबने देखा होगा धुरंधर, या फिर एस्पिरेशनल था. सो धुरंधर हैज रिवाइव्ड PVR. तो उस दिन मेरे कोई फ्रेंड ने मुझे बोला टेक्निकल चार्ज पे ये अच्छा लग रहा है, अभी यहाँ पे बाउंस बैक लग रहा है. मतलब इट इज क्वाइट एक्सपेक्टेड दैट बिकॉज ऑफ दिस धुरंधर फिल्म हर एक किसी ने देखा था, एंड इट वाज लाइक अ पैट्रियोटिक फिल्म भी था वो, रादर देन जस्ट अ मूवी. पीपल हैव वो इमोशन में जाके देखा. मैंने भी वही इमोशन में जाके देखा है मूवी, दैट देयर वाज समथिंग अबाउट पैट्रियोटिज्म की. वो 26/11 को जो अटैक्स हुए थे, एंड इट कुड हैव बीन अवॉइडेड एंड थिंग्स लाइक दैट. सो दिस इज हाउ you look at stocks. So good one, Aniket, that you have linked to this. पर ये और एक था कि और एक भी तुम इसको तुम बाकी चीजों को भी लिंक कर सकते हो. Unfortunately आज ही था पेपर में. Then I thought of telling you. Sir, Okay. may I add something? Yeah. Sir, actually, in recent quarters, like the Bollywood is reviving and too many blockbusters have come up, and in line also in March there are 2 more blockbusters, which is definitely a good sign for PVR. Like their box office collections are increasing by 2x, 3x due to such films. So it Yes. might be a good company to look on for coming 4 to हाँ. 5 quarters. What happens in PVR, the problem is you cannot have a long-term view. It is always a short-term view. Yes, sir. Depends on the So, movies completely. depending on the movie, yeah. So And that is why even the yeah. Dhurandhar Part 2 and KGF Part 3 is also coming in March. So it But is you also, never know whether these films will do a blockbuster. yes, sir. But So what even happens, I will say, KGF ना जब वो फर्स्ट टाइम आया था ना, KGF 2, 1 or 2, तभी मुझे ऐसे लगा था ना that this will boom. But what happened? KGF was a movie which was more dominated in the south than in the western part.
Okay, let's say my parents don't know what is KGF. So that time PVR was not having any screens in the south. Now they have started expanding because the majority Bollywood or maybe the movies are seen by the South people. You might have agreed Yes, sir. that South Indians are the one who are more movie fanatic than the West and the North. North Indians, so probably there are only Hindi Bollywood. They don't watch South movies, but nowadays, South has also moved towards Western and the North. It started with Bahubali, that people started watching the South Indian movies. Okay. Yes, sir. Yeah, Neha, you have something. Neha, you have not Sir, sent me any news. Sorry, Sean. Yeah, sorry, Sean. Go can I ahead. go ahead? Yeah, go ahead. So I just have an update news regarding the paints industry. So paints industry in general in the last 1 or 2 years has been a lot in the news because a lot of major developments have taken place. So one of the major developments is it is becoming an increasingly fierce competition between the main players. And for example, Asian Paints. The news is that Asian Paints has decided to go regional to protect its market leadership. A lot of new entrants have been challenging its leadership since last 2 years. Birla Opus had entered the market 2 years ago. Also, JSW has acquired AkzoNobel. So Asian Paints is feeling a lot of heat. Its market share, it was at its peak around 57-58%, is now down by 6-7 percentage points. So it is coming up with various strategies so as to boost its profit and loss statements, which have been which have not been that impressive since the last 1 or 2 years. So it's basically now focusing a lot on regional packs, developing regional packs across 8 to 9 states, uh, launching new colors, going and tapping into the premiumization space where it has launched um, slightly new texture brands appealing to urban customers. It is now betting on the rural uplift and a lot of the pent up demand since the last 2 years because in general the paints volume have been on the very slow growth, just in the low single digits, which might expect to boost in the next 1 or 2 years. The Q3 FY26 margin was slightly better, and after many quarters, it saw a good volume growth in the 8 to 10% range. And the margins, which were initially around 22-23% EBITDA, the management has said that it is now focusing more on increasing their top line. So even if they slightly reduce the margin, it would be okay for them as long as they remain competitive and protect their market share. So, sir, this is the news. I can go even more in depth regarding No, it's the fine. paints It's fine. industry. Okay, Paint, sir. I think, is going for I think it is taking probably a U-turn, and it has not done well in the past. But Yeah, with the industrial yeah, activity increasing and with probably real estate also, increasing, paints makes a big impact because of that's true. now next year. Yeah, So because a but lot of factors need to come together. For example, the real estate boom needs to take place, consumption needs to start going up. At the same right. time, people were reluctant to spend on because of some macroeconomic conditions. The salary wage was not growing that much in the last 1 year. So paints is something that it's not an item which is absolutely necessary. So it generally moves in cycles, unlike pharma or FMCG. Sorry. So all the analysts have been reading reports. It is now expected to pick up in the next few quarters and in the next few fiscals. Yeah, it is actually works in cycles. So that is why it is very difficult to understand this cycle what is, and it is majorly dependent on crude as well. The major raw material is crude. So Yes, any problems in the crude will lead to a huge impact on the market. yes. But yeah, the main crux of the news was that Asian Paints is doing all it can to protect its market share. And by the looks of it, it looks like it has a good few quarters coming up based on based on how it's positioning and how it's trying to make sure that the new entrants are not able to get hold of its distributors. Okay. Okay. Fine. Yeah, Sir, thank you. just to add, Yeah. so like if we see ना कि ये जो consumption trend pick हो रहा है, but if we see the housing market ना, तो वो तो decline हो रहा है sir. Like जो housing sales है and all the हाँ. reality players are not doing good.
नहीं, ये कैसा है, वो बिल्डिंग बनने के बाद, मतलब बनते तभी कलर लगता है ना, ऐसा है। सेल के बाद नहीं है वो, इट इज व्हेन इट इज मेड, ऐसा है। तो हाउसिंग तो ठीक है, हाउसिंग तो गिर मतलब वो अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ रहा है, तो इट इज बी टू बी है, देखो से वापस ये बी टू बी बिजनेस है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड क्या हो रहा है। एशियन पेंट्स, क्योंकि पेंट्स तुमने याद है तुम्हारे घर पे कब लास्ट पेंट किया था? हाँ वही तो सर, मतलब वो वन टाइम है एंड देन फिर वो रेपिटेटिव नहीं है। तो ये बी टू एक्चुअली बी बिजनेसेस है। हाँ सर, इसमें डेकोरेटिव पेंट्स और इंडस्ट्रियल पेंट दो में है। तो इंडस्ट्रियल है, पेंट्स हाँ। 10-15% के आसपास होता है। और डेकोरेटिव में सर उनका सबसे बड़ा इशू क्या हो रहा है कि जो रीपेंटिंग है ना वो बहुत कम हो गई है, ऐसे कम हो उनके गई है। कॉन्फ्रेंस में मैंने पढ़ा है कि इसी वजह से उनका ग्रोथ उतना नहीं आ रहा। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी जो लोगों ने बहुत सालों से होल्ड करके रखा था रीपेंटिंग घरों का अपना, वो अभी पेंटिंग अगले एक का, दो साल में हाँ। शुरू करेंगे। तो वही वो साइकिल है ऐसे, यानी कि जैसे अभी बिल्डिंग बना था, 5 साल हो गए तुम्हारे बिल्डिंग को, ऐसे नए बिल्डिंग्स बने ना, तो नाउ दे विल पेंट। बट अभी क्या हो रहा है ना शॉन, व्हाट आई हैव सीन इज, मेरे भी घर पे वी हैव स्टॉप्ड पेंटिंग, वी हैव यूज दैट वॉलपेपर्स यूज करते हैं, टेक्सचर। वो पेंटिंग बहुत बहुत रेयर हो चुका है, मतलब इफ आई वांट टू चेंज माय एंटायर इंटीरियर तब मैं सोचूं पेंट करने का। हाँ और बिकॉज पेंटिंग का भी एक प्रॉब्लम है ना, यू हैव टू वो मतलब आई हैव अ सेंसिटिव नोज, तो मुझे वो क्विकली उससे कुछ ना कुछ सर्दियाँ हो जाती है, तो प्रॉब्ली हाँ आई डोंट। अगर मुझे पेंटिंग करना तो मैं घर पे रहता ही नहीं। मतलब हाँ तुमको जब पता है घर पता पेंट है। करना होगा तो यू हैव, इट बिकम्स ऑल मेसी, यू कैन नॉट डू हम्म। एनीथिंग एट योर होम। हाँ सो इट सर, ओनली एक्चुअली एशियन हैपेंस पेंट्स व्हेन का यू। मैं एनालिसिस भी कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया है कि कई पिछले 2-3 सालों से उन्होंने इंटीरियर डिजाइन्स, किचन बाथरूम वेयर, इसमें भी डाइवर्सिफाई करने की पूरी कोशिश करी है। तो बस उनका अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है वो। बट अपार्ट फ्रॉम पेंट्स, अब वो और सेक्टर्स में भी रिलेटेड टू होम इनसाइड द हाउस, वो उस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। क्या, बिकॉज वो पेंट का मैंने बोला ना, दैट्स एन इशू। मैंने मैंने मेरे घर पे आई डोंट रिमेम्बर पेंट किया है अभी लास्ट। या ना मैं किसी मेरे तो फैमिली मेंबर्स को बोलता हूँ पेंट करने को। तो आपने जो वॉलपेपर से वॉलपेपर बोला, वो वॉलपेपर भी बना के देते हैं इंटीरियर के लिए एशियन हाँ, पेंट्स। पर वॉलपेपर में क्या है, लोकल कंपटीशन काफी है। राइट राइट, वो थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड है ना, तो वहां से उनको हाँ, कोशिश कर रहे हैं वो। बट उनका मतलब कॉन ऐसा है कॉल कि का मतलब, वॉलपेपर है ही तो मैं एशियन पेंट का क्यों लगाऊं, मेरे जो लोकल बोलेगा वही मैं लगाता हूँ, ऐसा है। चाइनीज हाँ काफी है इसमें। वो जो कारपेंटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनके साथ वो टाई अप करते हैं ताकि वो उनको माल चिपका पाए। तो उनका हाँ। कॉन कॉल में मैंने पढ़ा था, वो कह रहे थे कि हम हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि जो घर के इनसाइड द हाउस जो होता है, नॉट जस्ट हम्म। पेंट, सब कुछ हम सब में टैप करना चाहते हैं। क्या करेंगे, हाँ, तो इट विल टेक टाइम, वही है, इसके वजह से इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। मतलब आई फील एज एन पेंट इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रियल अगर मैं छोड़ा तो, क्योंकि इंडस्ट्रियल तो मुझे पता नहीं व्हाट इज हैपनिंग इन द हाँ इंडस्ट्रियल, बट हाँ डेकोरेटिव। डेकोरेटिव में तो है ही नहीं, मतलब राइट। it is काफी कम है। और क्यों कम है, बिकॉज ये ऑलरेडी बड़ा हो चुका है ना एशियन पेंट, ऐसा नहीं कि कम है, वो हाँ कर रहा है, पेंट यूज कर हो तो रहे रहा हैं है, वो ऐसे ऐसे। कोशिश कर रहा है। बट सर क्या है ना कि हाँ, 2 साल से जो इंडस्ट्री है इन जनरल, वही बहुत कम ग्रो हुई है। कम हो रहा है, यस। तो सभी मार्केट प्लेयर्स अफेक्ट हो रहे हैं। सो 1-2% वॉल्यूम ग्रोथ ही देखने मिल रही है अभी, बहुत क्वार्टर्स के बाद अभी 6-7% वॉल्यूम ग्रोथ देखी गई। है ना, ये बिरला ओपन भी उसको अननेसेसरी कंपटीशन दे रहा है, इंडिगो पेंट्स है, एंड देर आर, पहले क्या था, एशियन पेंट का ना मोनोपोली टाइप बिजनेस था, क्योंकि कोई कंपटीशन ही राइट नहीं था। राइट। अभी क्या हो गया, अभी देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन। वो इंडिगो पेंट्स के ऐड में धोनी आता है, मतलब यूसी कितना बड़ा है उसका, इतना बड़ा या कंपनी है वो। राइट। देन ये बिरला ओपस अभी अदानी ने लिया ना, आई थिंक बिरला ओपस, नहीं, बिरला ग्रासिम ने खरीदा है। ग्रासिम ने लिया, सॉरी, हाँ। अदानी का भी कोई है जो है ना, उसके अभी रियलिटी में करता है। अभी जेएसडब्ल्यू पेंट्स भी आया है मार्केट में। जेएसडब्ल्यू पेंट्स भी है, यस। और सो और अपना पीडी लाइट है, उन्होंने भी छोटे मार्केट्स में ईस्ट इंडिया के एक हैंड्सो एच से कोई तो ब्रांड है, वो लॉन्च किया है, नाम भूल गया। तो पेंट, मतलब मुझे समझता नहीं है पेंट इंडस्ट्री, बिकॉज बी टू बी है। बी टू सी होगा तो जैसे मैंने यही पूछा, मैं आई विल डू अ रिसर्च की पूछ लो सबको, इतने लोग हैं, किसने लास्ट पेंट किया होगा घर पे, कब किया है वो भी। या ये मतलब मुझे नहीं पता, मेरे फैमिली में किसी ने पेंट किया, आई डोंट रिमेम्बर कि मेरे फैमिली में किसी ने पेंट किया अभी तक। हाँ, वो कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ये टेक अ उन्होंने कहा था वॉलपेपर कि रीपेंटिंग्स की स्लो ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, तो हम उसके ऊपर और कुछ पहले बहुत डाइवर्सिफाई होने करने का, की कोशिश करें। पहले पेंटिंग हर 1-2 साल में वी यूज टू पेंट, आई स्टिल रिमेम्बर। मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे वी यूज टू पेंट, बिकॉज वो खराब हो जाने का, बारिश होने का, तो क्वालिटी ऑफ हम्म। वर्क भी पहले अच्छा नहीं था, तो क्या है वो लीकेजेस होने के, ये सब होने के, तो पेंट्स निकल जाने का।
आज Yeah. वैसा नहीं होता है. Even the build quality has increased, no? When you talk about premium properties, उसमें ऐसे लीकेजेस नहीं Yeah. होते हैं जो पहले होने के. हम्म. सही है. ऐसा है. Okay. Because Neha, and what news do you have? Sir, I have a news on e-commerce. I've sent Yeah, you today, कब भेजा तुमने? today morning, 9:55, Which number? Which number you have sent? 77. ठीक है, go ahead. Should I share my screen? No, it's fine, go ahead, go ahead. Okay. So, e-commerce market is projected to reach 280 to 300 billion dollars by 2030. Consumer spending is expected to reach 3.5 to 3.7 trillion dollars by 2030, and online commerce is projected to account for 7 to 8% of this. Presently 120 to presently at 120 to 140 billion dollars, e-commerce market is expected to double by 2030. This increase is majorly said to be led by increase in demand from smaller cities and rural areas. Specialized platforms outshine traditional horizontal marketplaces by accounting for more than 60% of online spending. This is mainly due to stronger brand positioning and more tailored user experience. Quick commerce is emerging as one of the fastest scaling segments, expanding at 100% annually. Social and chat commerce is growing at 40 to 45% per annum because it is more personalized and discovery driven shopping. Thank you. Neha, no, also, you have to also list the company's name you have told, no? So, Yes. Listed e commerce companies are Nykaa, Mamaearth, Swiggy, Zomato, First Cry, Meesho. see, Neha, your news should be, as I yesterday also I've told in the class, that it should be basically to investment rational. That what investment rational you're talking about. Okay. Okay, e-commerce is projected to grow to 830 to 300 billion by 2030. The total consumer spending is expected to grow by expected to reach 3.5. So इसने growth rate नहीं दिया है. It is expected to double. E-commerce is expected to double. E-commerce expected to double, but कहाँ से? अभी से. तो double मतलब कितना? You don't have to talk in doubles ना. तुमको मॉडल में डालना है. मॉडल में बोलोगे डबल डालना है तो नेक्स्ट ईयर में कितना होगा? Double is, I think, 100%. हर साल. No, It it is is double in expect. 5 years ना. It is double in Yes, 5 years. yes. तो हर साल कितना हो गया? 20% नहीं होता है. बोला था ना, you have to use that formula. RRI is expected to double in 5 years, correct? 25 चल रहा है अभी, 26 चल रहा है, sorry, 4 years तो 4 years में will expect to double 100 का 200. Will expect to grow by 19%. This is how you speak. Okay. फाइनेंस स्टूडेंट ना, डबल मतलब एक साल में, हर साल में थोड़ी 100% ग्रो होता है, ऐसा है क्या पॉसिबल? Mhm. No, no. This increase is majorly led by increase in demand from smaller cities and rural areas. Okay, so ये अलग होगा तुम्हारा. See, e-commerce is expected to grow by 19% and expected to reach 300 billion by 2030. Then it is the consumer spending is also expected to increase to reach to 3.5 trillion, which is a projected growth rate of 8%. Presently, 120, 140 billion e-commerce expected to double by 2030. Okay, this increasing is majorly led by demand from small. हाँ तो तुम्हारा start ही ऐसा होना चाहिए that the e-commerce market is expected to increase 19% by every year, or 19% CAGR by 2030. That's a huge number. And this increase Okay. is to be led by demand from smaller cities and rural areas. Okay. So what is happening? So in that, सब बात करना है. You don't have to just speak it. So उसमें क्या हो रहा Okay. है?
चलो हिंदी में डालो ना, फिलर्स बोलते हैं ना मैम, फिलर्स डालो. Okay. Okay, so in that, the specialized platforms like Nykaa, Myntra, Pharma has outshined traditional marketplaces like Amazon, Flipkart, and which are accounting for nearly 60% of the online spending. Okay. क्यों हो रहा है ये? So this is mainly due to, फिर रुकना, stop. Mm-hmm. Sir, this is mainly due to stronger brand pricing and tailored use and user experience. अभी वो लिखने की जरूरत नहीं, more tailored user experience. Okay. फिर उसमें सर इन द क्विक कॉमर्स स्पेस स्विगी इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द fastest scaling segment, expanding at 100% annually. Social and chat commerce. Swiggy is Sorry, just an example of quick commerce. quick commerce. Overall, quick commerce business is scaling at 100% annually. Okay, अच्छा. Then social and chat commerce like Instagram is also growing 40 to 45% because of its more personalized and discovery-driven shopping. So overall, so conclusion. So overall, what I'm seeing is that even I think that even I buy from, or maybe I see people, friends buying it from Instagram, and so social media are influencing a lot. So we expect the e-commerce industry to grow at a much faster pace. And in that, there are stocks like Nykaa, Mamaearth, Swiggy, Zomato, First Crime, Show. These are the stocks to look at. Though these are all स्टार्टअप कंपनीज, इसमें किसी का प्रॉफिटेबल है नहीं. अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्विगी से तुम, क्या बिकता है स्विगी से? व्हाट डू यू सेल? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, Groceries and day-to-day groceries and what? essentials. Day-to-day essentials. So can I say this can also be linked to FMCG companies products, FMCG industry? कि स्विगी का ग्रोथ हो रहा है मतलब क्या? मतलब एफएमसीजी का ग्रोथ हो रहा है, इन शॉर्ट. Yes. Yes. दिस इज हाउ यू लिंक द न्यूज. Okay. News was good, but you have to present it in a better way so that fillers use करना है काफी टाइम. You have to stop, then start again. तो Okay. ये भी तुम्हारा ध्यान में रखना है कि सामने वाला तुम्हारा सुन रहा है कि नहीं. Okay. Because when I was an analyst, क्योंकि मुझे मेरे फंड मैनेजर को इम्प्रेस करना था ना. अगर Mm-hmm. मेरा फंड मैनेजर मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, Mm-hmm. तो वो फिर मेरा ग्रोथ नहीं होगा ना. ग्रोथ नहीं होगा, सैलरी हाइक नहीं होगा. Mm-hmm. सो अज्यूमिंग आई एम योर मैनेजर, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आई एम लिसनिंग. एंड तुम्हारे साथ लेट्स से तुम्हारे कोई अभी यहाँ पे सीनियर्स भी है तुम्हारे, लेट्स से दे आर फ्रॉम 2-3 months या 2-3 years से है अज्यूमिंग इंडस्ट्री में, उनको ये पता होना चाहिए. Because tomorrow, let's say from our class, कभी कभी मेरे मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं कॉल पे. तो if they Okay. hear someone saying something, okay, this Mm-hmm. guy is saying better, ये क्या बोल रहा है? Okay. सब तो you have to be assuming ऐसा, ये सब तुम्हारे एनालिस्ट ही है. डोंट assume कि ये सब स्टूडेंट्स है. सब सुन रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. बिकॉज यू विल नॉट बिलीव, ऐसा था एक स्टूडेंट ने क्रिजिल में, उसको लगा था वो ना सिर्फ कॉल पे आके बात करने का ज्यादा, बट दूसरों का भी सुनने का. तो उसमें एक अभिषेक करके था, एंड देयर वर एक हर्ष करके भी था, जो लोग ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं. वो लोग भी आने के फिर कॉल पे. तो वो Mm-hmm. लोग जो बात करने के, जब भी मीटिंग्स में भी, Mm-hmm. जो कोई सुनने वाला होता है उसको भी समझता है कि हाँ ये कुछ बात कर रहा है. एंड एट टाइम्स की जब भी तुम अलग अलग कंपनीज में बात कर रहे हो, तो पता चलता है हाँ ये कॉल पे था, ये यूज्ड टू टॉक गुड. तो ये ऐसे भी ग्रोथ होता है. मतलब मेरा ऐसा हुआ Mm-hmm. कि मीटिंग में जाके व्हेन आई वाज स्पीकिंग अप इन फ्रंट ऑफ अ फोरम, तो कोई ना कोई तो सुनता है ना तुम्हारी बात है, Mm-hmm. अगर वो सुनने लायक हो तो. ग्रोथ इज एनीवेयर, यू जस्ट हैव टू बी देयर एवरी डे प्रेजेंट. कंसिस्टेंसी हेल्प्स. आज सबको पता होगा कि अनिकेत कम्स एवरी डे, कौस्तुभ कम्स एवरी डे, और भी है 2-3 जो हर हर दिन आते रहते हैं. मतलब भले वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, बट पता है कि ये लोग रोज आते हैं, एंड ये लोग दे आर डूइंग समथिंग. सो व्हाट हैपेंस, द वन हु इज कमिंग ऑन द कॉल्स एवरी डे, दे नो दैट इसके पास कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज है जो हमारे पास नहीं है. अभी से भरत को मैंने बोला इज नॉट कंसिस्टेंट, तो वो भी पता होता है. मतलब मुझे ही नहीं, बाकी लोग को भी पता होता है कि नहीं आता. क्या क्या कौस्तुभ, एनीथिंग ऑन द कैफे नॉर्म्स? Yeah, तो hi क्या sir, have क्या आया one कैफे good के बाद? morning. आज क्या आया Yes, कैफे के? sir.
like literally कितने दिनों से न्यूज आ रहे हैं. So like one day I took up the news and I see it every day. So I'm just covering it and keeping you all updated. नहीं वही हो So जो आज क्या हाँ, तो कल मैंने लाइक क्रेडिट्स के बारे में बात किया था ना थोड़ा, कि तभी इंफॉर्मेशन नहीं था. सो टुडे दे हैव गिवन सम इंफॉर्मेशन अबाउट लाइक क्रेडिट्स, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज इट. तो लाइक ये लोग एक मार्केट प्लेस बन सकता है क्रेडिट का. सो लाइक यू कैन एक्सचेंज क्रेडिट विथ अदर पीपल. ओके Like if you produce a car and you get some credits and you can exchange with other people. Or like मैंने थोड़ा research किया and I got some data for like how much credit you can get on per car. So like if it is battery electricity, then you get the highest amount of credits, which is 3. And below that there is plug-in hybrid, which is 2.5. But then below that there is strong hybrid, which is 2. And below that there is flex fuel ethanol 1.5. उसके बाद 1. So like these are the hybrid names, these are the credits which any person will get. And the news was about they will make some kind of marketplace where OEMs can trade with each other for credits. So I thought it हाँ was interesting because this is already a model which is which is in place outside of India. Like this was specified by the article. And one another thing, it said that key OEMs have to choose for some kind of technology, like 12 approved tech interventions, stuff like कि electric water pumps, solar reflective paints की ये सब, to lower the energy emissions. But ना इसमें और एक न्यूज़ था कि if all of these trading takes place for a marketplace for credits, they will have to up the cafe norms again. There are a set of changes and they will have to make it a little bit stricter, which the OEMs don't want. So there are a lot of drafts going on because जो as I said 2 days ago कि 2024 2025 September में एक ड्राफ्ट आया था, उसमें बोला था कि ऐसा सब नहीं होगा. But now they are proposing other stuff, so they are changing up a lot of things now in the draft, and every day there is news and every day there is some kind of change. I feel like these guys are quite confused कि like अभी हम क्या कर रहे हैं. ओके ओके Just an update. हाँ मतलब इसमें वही इलेक्ट्रिक बैटरी हाइब्रिड्स सॉरी Yup. प्लग इन हाइब्रिड्स का भी है हाइब्रिड Yes, कार सॉरी 2.5. हाँ सो ये वही है So, ना मारुति इज देयर इन दिस फ्रॉम लास्ट सो मेनी sir, years another thing I wanted to say that कि पिछले 4 or 5 days से like जब भी मैं पेपर खोल रहा हूँ, the first page there is always an ad for an EV. Like आज JSW का ad था, मारुति का ad था, कल मारुति का ad था, ई वितारा का ad था. Like for 4 to 5 days consecutively, like usually रहता है. नहीं वो तो क्योंकि लॉन्च हुआ है ना इसके लिए आ रहा है हाँ सर, बट अलग अलग कंपनीज के भी डाल रहे हैं. So I don't know, maybe it's spending a lot of money on this or I don't know what. तो जेएस पता है मैं ये बोलने का प्लग इन हाइब्रिड्स आई शुड टॉक अबाउट प्लग इन Yes, हाइब्रिड्स yes, तो ये hybrids. प्लग इन हाइब्रिड उस दिन जेएसडब्ल्यू ने कमेंट किया कि दे आर कमिंग अप विद अ प्लग इन हाइब्रिड इन अ नॉर्मल रेंज इन 2026 ये साल में ही दे आर लॉन्चिंग अ प्लग इन हाइब्रिड कार जो सिर्फ अभी लग्जरी में मतलब 4 करोड़ के ऊपर की गाड़ियों में ही है प्लग इन हाइब्रिड्स तो वो बोल रहा है कि मैं विल लॉन्च अ मच चीपर वर्जन चीपर मतलब नॉट 25-30 लाख का तो होगा प्रॉब्ली बट लॉन्च कर रहा है वो जस्ट बिकॉज है ना इलेक्ट्रिक इज नॉट feasible It's in not India. feasible for them, yes. Correct. कि ना इफ यू सी कौन से कार है तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखते हो रास्ते पे टाटा नेक्सॉन दिखना बंद हो गया अभी नए नए वाले Sir, जस्ट सी every EV I see, only one I can remember, which is Mahindra ka B6. Like I see it B6 everywhere. यस B6 वो है सब ज्यादा ज्यादा बहुत अच्छा वेंचर है. दिखती है सस्ते में सस्ते में B6 फिर भी वेंचर है. एक्सपेंसिव है अच्छा सर B6 कॉस्ट उसके BYD पास दिख रहा सर सॉरी BYD हाँ अभी भाई BYD उसी is पे आ very रहा था rare. मेरे एरिया में नहीं है सर, वो बहुत महंगी कार है. Like it is ultra बहुत महंगा premium. अल्ट्रा पे वही तो ऐसा ईवी इज फॉर प्रीमियम लग्जरी ओनली क्योंकि जो लोग पहले ईवी जिसके पास थी नहीं वो लोग टाटा नेक्स्ट मतलब टाटा मोटर्स का ही ईवी था एंड ईवी इज लाइक अ लग्जरी कार सी टाटा नेक्सॉन मेरे पास अगर 20-25 लाख रुपए है प्रॉब्ली इट विल बी माई सेकंड कार टाटा नेक्सॉन वोंट बी माई फर्स्ट कार ईवी में एंड सोचो अगर मैं 20 लाख की सेकंड हैंड गाड़ी लेता है तो कहना से मेरी पहली गाड़ी तो कम से कम 50-60 लाख की होगी डू यू एग्री इफ आई कैन बाय अ सेकंड कार विच इज ऑफ 20 lakhs तो पहली कार तो मेरी ऑब्वियसली महंगी होगी तो ईवी वॉज अ लग्जरी पार्ट तभी लग्जरी में कोई था नहीं तो जिनके पास पैसा था वो लोग ने ले लिया बस ईवी ईवी नया क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज था बट नाउ व्हेन यू सी कंपटीशन यस एज यू राइटली मेंशन B6
30 लाख की गाड़ी कौन लेता है? सेकंड गाड़ी, वो भी डू यू थिंक मिडिल क्लास गाय कैन अफोर्ड अ 30 lakhs कार, वो भी सेकंड? एंड ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारी पहली कार जाके B6 होगी, इवन इफ यू हैव 30 lakhs. इट हैज टू बी अ सेकंड कार. सो लग्जरी तो टाटा मोटर्स इज नॉट ग्रोइंग. विंडसर थोड़ी बहुत दिखती है, थोड़ी बहुत दिखती है. वो भी मेरे ख्याल से विंडसर वो लोग लेते हैं जिनको रोज ऑफिस जाना पड़ता है, उनके पास ही है विंडसर. देखो जरा, नो, मुझे अगर रोज ऑफिस नहीं जाना है तो मैं क्यों ईवी लूं? वो भी 20 लाख की. 20 लाख की मैं कोई अच्छी गाड़ी ले लूंगा, क्रेटा, सेल्टॉस, अगर मैं रोज ऑफिस नहीं जाना है तो. सर ऑल्सो बिकॉज ऑफ ईवीज में डीजल जैसा फंडा है कि लाइक इफ यू यूज इट मोर देन यू गेट अ ग्रेटर रिटर्न. लाइक इफ यू आर नॉट अ करेक्ट, हाँ, रेगुलर यूजर इट्स नॉट गुड फॉर यू. करेक्ट. एंड वो उसका किलोमीटर भी ना, ये किलोमीटर चलने के बाद ही उसका ब्रेक इवन आता है. सो नॉट या ड्राइविंग करना एवरी डे बेसिस. मतलब वो मैंने जब वो गया था नेक्सॉन देखने को, तो उस पे और नॉर्मल नेक्सॉन में 7 लाख का फर्क था. तो बोलते सर आप दिन में अगर 50 किलोमीटर चलाते हो तो उसका काम का है, वरना इट इज ऑफ नो यूज. हाँ, अगर अभी जो B6 वो सब दिख रहे, तो वो दिस आर लग्जरी ईवीज, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो है ही लग्जरी. वो कोई ऑफिस जाने के लिए नहीं यूज करता B6. 30 लाख की गाड़ी लेके कोई ऑफिस नहीं आता है. एंड आते हैं तो भी बस इट इज फॉर फन, कि बस मुझे ईवी चाहिए, सिटी में मनूवर करना है, मुझे इतनी बड़ी गाड़ी नहीं चलानी है सिटी में, मुझे एक ईवी चाहिए जो पेट्रोल भी बचाए और मुझे लग्जरी भी दे. वो लोग ही ईवी ले रहे हैं. BYD भी is on the same part. BYD भी लग्जरी, अपर लग्जरी कार है, which will probably be your second car, second लग्जरी कार, कि मुझे जैसे ईवी खरीदना है. तो आज तुम देखो मर्सिडीज, BMW ने उस दिन कमेंट किया था कि BMW की ईवी ज्यादा बिक रहे हैं. मर्सिडीज हैज आल्सो लॉन्च विद द CL, आज उसने लॉन्च किया एक CLE करके, C क्लास का ईवी लॉन्च किया, which is having a claim range of 790 kilometers. That's huge. भी है वो 60 लाख की. कौन लेने वाला 60 लाख की सेकंड कार, वो भी द वन हु ऑलरेडी ओन्स अ लग्जरी कार. तो ईवी में, ये तो ईवी में मारुति भी, मारुति का अभी तक सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, वो भी लोग ने इसीलिए लॉन्च किया कि अगर इंक्वायरीज आती है तो हमारे पास भी प्रोडक्ट है. सो ईवी इज नॉट ग्रोइंग. व्हाट इज द सेकंड इज द हाइब्रिड्स. हाइब्रिड इज द सेकंड पार्ट. एज यू सेड, कैफे नॉर्म्स के भी वही इम्पैक्ट होगा. कैफे 3 नॉर्म्स स्पेसिफिकली फॉर हाइब्रिड्स. मतलब हाइब्रिड इज द ओनली वे अहेड. सर बट द एंड थिंग इज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वो लोग को मास इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्राइसेस का बहुत झोल करना पड़ेगा बिकॉज दैट टेक इज वेरी हाँ, कॉस्टली. कॉस्टली, हाँ वो है नहीं, बट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है ही ना. वैसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तो है. प्लग इन हाइब्रिड हाँ, इज अ प्रॉब्लम, बट स्ट्रॉन्ग प्लग इन हाइब्रिड इज तो अ है ही. प्रॉब्लम. वो विटारा है ही ना, विटारा प्लग इन हाइब्रिड ही है. यस. नॉट प्लग इन हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ही है. So JSW has said they will come up with a strong hybrid, a plug-in hybrid. Hyundai has said they will come up with 2 hybrid models. I think उनकी क्रेटा भी अभी हाइब्रिड आ रही है. They are, उनके ऑटो कार शो में दिखाया गया था कि they will come up with a क्रेटा hybrid. So ये मेरा ध्यान होता है. ऑटोमोबाइल पे तो होता है, टू व्हीलर्स पे नहीं होता. Probably I am not more enthusiastic about टू व्हीलर्स, पर फोर व्हीलर्स पे तो मेरा होता ही है ध्यान. ओके, ओके, ओके गाइस, स्टॉप हियर. अच्छा, मैं तुम्हारा कोई डाउट था ना, एक सेकंड. I saw your message later on. हेलो Man, what ऋषभ was... सर. Yeah, Viraj. हेलो. Yeah, Viraj. सर एक शॉर्ट न्यूज़ बता सकता हूँ. हाँ, बोलो. हाँ सर, एक इकोनॉमिक टाइम्स पे लास्ट पेज पे मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था रिलेटेड टू द RODTEP. So the news is about the rate cut of RODTP for around 50%. What is that, Aro? Yes sir. What is that? सर कुछ बोले थे ये सर? क्या वो है, full remission form? on duties and taxes on exported products. सर अच्छा, remission of duties and taxes on export products. सर वो 50% से कम हो गया है. okay, तो okay. सर इसमें इफेक्ट वो है जिनको लाइक फॉर कंपनीज विद लोअर मार्जिन्स ऑफ 1 to 2%. सो उनके लिए मार्जिन स्क्वीज हो चुका है. सो न्यूज में 3 कंपनीज के बारे में बताया जाया था. The companies like two wheelers and four wheelers. So major company
is of Bajaj Auto. So the impact is higher because their export is more as compared to TVS Motors. And they have talked about the Maruti Suzuki, but Maruti Suzuki export is not more as compared to domestic. So it will have a less effect on the Maruti Suzuki. So sir, ये एक short news था related to the decrease in the rate cut of RODTEP. Okay, okay. हम्म. तो भेजा करो ना ये, just send me because I'll not be able हाँ to हाँ सर भेजा था मैंने आपको वो 777 नंबर है ना उस पर भेजा था आपको सर. अच्छा ओके हाँ रोटी RODTP rate cuts 3% export incentive drops from हाँ ठीक है एक्सपोर्ट में तो कौन है बजाज है आई थिंक एक्सपोर्ट में तो हाँ सिस्टम बजाज है इसलिए वो कंपेयर टू बहुत सा मतलब 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स में 2 व्हीलर ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं और उसमें भी बजाज ऑटो. बाकी ऐसा मोस्टली कंपनीज पे ज्यादा इफेक्ट गिरा नहीं है. कि मारुति का भी है बट मारुति का हाँ ओवरऑल पोर्टफोलियो का कम है ओवरऑल सर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में कंपेयर करेंगे तो उसका मोस्टली डोमेस्टिक पे ज्यादा फोकस है, एक्सपोर्ट इतना नहीं है. बट ये क्या व्हाट इज दिस आर मुझे नहीं पता RODP व्हाट इज दैट सर वो फॉर एग्जांपल इफ मेरे को एक्सपोर्ट करते समय 1 लाख रुपीज अगर मिलता है तो वो थोड़ा सा रिफंड एक्स्ट्रा लाइक 1% है तो 1000 रुपीज मिलता था. बट अभी वो 50% कट हो गया तो आई विल गेट 1,05,100. तो थोड़ा सा मार्जिन स्क्वीज हो जाता है बस. अच्छा अच्छा क्लियर इमेज इम्पैक्ट ऑन द मार्जिन ऐसा क्यों किया है मतलब में कुछ लिखा है सर उनको डोमेस्टिक पे ज्यादा फोकस करना था और कुछ नहीं सर. ऐसा जैसा फोकस मोस्टली न्यूज नहीं की क्यों किया. ओके ओके ठीक है ठीक है सर थैंक यू. महेन तुम्हारा डाउट क्या था महेन महेन यू देयर महेन मनोट ओके आई विल मैसेज यू हाँ अजय शिवराज हाउ आर यू सर फाइन सर सर एक डाउट था अ, जैसे शेरेट होटल्स का जो उनके प्लेज किया है उन्होंने शेयर उसका परसेंटेज सर 31% है सर उसको कैसे देखेंगे मतलब उसको कैसे एनालाइज करेंगे कि प्लेज किया है उनका सॉरी क्या किया तुमने सॉरी नो नो मेरा एक डाउट था जैसे अपन शेरेट होटल को भी मतलब अपने अच्छा मतलब मान रहे हैं ना कि हाँ इन्वेस्टमेंट हाँ पर्पज से हाँ तो हाँ मेरा डाउट यही था कि एक उनका एक है कि उनके जो प्लेज किए हुए शेयर्स है तो वो उसका हम्म, परसेंटेज 30% है 30 to 31% है तो उसको हम्म। मतलब रिस्क के थ्रू मतलब रिस्क परस्पेक्टिव से या मतलब कैसे देखें उस चीज को एनालाइज करते वक्त हाँ ये वो डाउट तो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है कि कंपनी ने शेयर्स प्लेज किए हैं अच्छा सी देयर आर टू रीजंस फॉर इट प्लेज करते मतलब हमने कोलैटरल रखे है ठीक है हाँ यस यस इफ द कंपनी इज नॉट डूइंग अभी क्वेश्चन आता है कि शेयर्स होल्डर्स ने प्लेज क्यों किए शेयर्स क्या रीजन है शेयर्स प्लेज करने मतलब दे आर नॉट कॉन्फिडेंट उनको पैसे नहीं मिल रहे ये बैक ऑफ द माइंड सवाल आता है कि बैंक उनको पैसे नहीं दे रही इसके लिए उन्होंने प्लेज किए अच्छा तो ये तो एक मतलब ड्रॉबैक होता है मतलब अगर कंपनी को मुझे देखना है जैसे चार्लेट और IHCL इफ आर दो बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन प्रोबब्ली आई विल यूज IHCL हाँ उनका कुछ भी नहीं है मतलब कोई मतलब ये की बात परसेंटेज है कि नहीं तुम्हारा घर गिरवी है तुम्हारा घर गिरवी हाँ रख के कब करते हो तुम ऐसा सोचो सो सब लाइक फंडिंग सोर्स एकदम सब फाइनेंसिंग का सोर्सेस अगर सब खत्म सोर्सेस होने सब के खत्म हो बाद गया और फाइनेंसिंग का हाँ सोर्सेस सब खत्म हो गया मतलब ऑब्वियसली यू आर इन सम बैड सिचुएशन हम्म। तो ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा ही बैड में होगे कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हो ऐसा भी हम्म होता है हम्म हम्म, हम्म, ये ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है तुमको देखना है अच्छा इसने जो प्लेज की है तो कब वो वापस लेगा क्या रीजन से प्लेज हम्म किए थे सी कभी कभी मैनेजमेंट बोलते हैं हमने प्लेज इसके लिए किए थे क्योंकि हमारे पास कोई फंडिंग सोर्स नहीं था एंड हम्म हमको पैसा रेज नहीं करना था हमको हमारा शेयर होल्डिंग हम्म, डायल्यूट नहीं करना था अच्छा तो वो एक हाँ बट डिपेंड्स कि तुमको फिर कंपनी पता होना चाहिए कंपनी कर क्या रहा है इज इट ग्रोइंग इस हम्म प्लेज शेयर से फाइन ठीक है अभी है तो उनको जरूरत थी उन लोग ने लिया है अभी फ्यूचर में क्या कर सकते हैं अभी उन्होंने प्लेज करके पैसा तो लिया है तो पैसे का कुछ कर रहे हैं मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं क्या लोग उनके पास आ रहे हैं क्या
नहीं, क्योंकि पेयर्स के कंपैरिजन में बहुत ही हाई है ये जो अमाउंट है, मतलब ये हाँ जो परसेंट शेयर है वो, इसीलिए मैं पूछ रहा एट द एंड यू हैव टू टॉक अबाउट कंपनी। हूँ। हम्म। कंपनी क्या कर रही है? अभी तुमने प्लेस तो किया, ठीक है, फाइन, इट्स अ हम्म। बैड हम्म। साइन। और तुम वो हम्म। प्लेस के आगे कुछ कर रहे हो क्या? आर यू इन अ पोजिशन ओके। कि तुम वो प्लेस शेयर हटा दो फॉर टाइम में? कि हाँ, अगर बिजनेस में कुछ है तो वो हटाने के चांसेस है, कम करने के हाँ चांसेस है। वन सेकंड ना guys, एक सेकंड ना। हाँ सॉरी। तो क्वेश्चन ये आता है प्लेज के शेयर्स में दैट तुमने घर गिरवी रख के बिजनेस कर रहे हो, जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। अगर कुछ हम्म। खराब होता है तो घर के साथ सब जाएगा, तो वो रिस्क होता है। हम्म। इट्स ह्यूज रिस्क। तो अगर मुझे तुम पे पैसा लगाना है तो प्रॉब्ली कैसा होता है ना, पता ना कि तुम्हारे पास घर तो है, कम से कम डूब गए तो। अभी तो वो भी नहीं है तुम्हारे पास। तो वो एक है, तो यू क्योंकि हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन दिस कंपनीज कि ये सच में हम्म। ग्रो हो रहे हैं या हम्म। नहीं। वो कम प्लेज कर इज रहे हैं नॉर्मल, ओवर द नाउअडेज टाइम। होता है प्लेज। सॉरी। नाउअडेज प्लेज होता है, इट इज नॉट अ बिग ओके। थिंग। स्टार्टअप कंपनीज में प्लेज करना पड़ता है उनको। ओके सर। ऐसा। गॉट इट। ओके। तो आई थिंक पर्सनली प्लेज इज अ बेटर ऑप्शन देन डाइल्यूटिंग इट। मतलब तुम घर गिरवी रख के बिजनेस करो या घर का एक हिस्सा किसी और को दो और बिजनेस करो, क्या मतलब क्या बेटर है? मतलब यही प्लेज करके ही सर, क्योंकि बाद में प्लेज वो पूरा करके आप वो ही भी हो एक, जाएगा। हाँ, ऐसे पॉइंट में वो भी एक बेटर है कि तुम्हारे पास तो रेस करते हैं वो लोग पागल है कि अपना घर का एक हिस्सा दे देते हैं किसी और को। हम्म। ठीक यस सर। है। ओके। ओके गाइस, सो विल सी टुमारो अगेन। सी अगेन होटल इंडस्ट्री इज इन फोकस। तो जो जो टास्क दिए वो करो, इंटरव्यू में काफी काम में आएगा कि दैट इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री नाउ। एंड तुम्हारे पास इतने सारे आर्टिकल्स भी है। मैं बोलता तुम, आई थिंक होप यू गाइस आर पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया करो जब भी करते हो, तो दैट नो इफ anyone is looking at your LinkedIn profile, he knows that you are doing something in RK advisory, you are doing something। सिर्फ कोर्स नहीं कर रहे हो, ये कोर्स में कोई वैल्यू नहीं है आजकल। ओके। ओके सर, वो जो कंपनी प्रोफाइल या रिपोर्ट भी बनाते हैं वो भी पोस्ट करना है, मतलब वो हाँ भी कर कर दो ना, सकते हैं क्या? कर दो अच्छा। एक आर्टिकल लिख के कर दो, मतलब पोस्ट में कुछ लिख के। ओके सर। व्हाट डू यू थिंक, वो कंपनी क्यों अच्छा लगता है? व्हाट इज द यूएसपी इन दैट कंपनी? किसी को अगर कंपनी के बारे में जानना है, कोई अगर जस्ट स्क्रॉल कर रहा है, चाइल्ड होटल्स क्या करते हैं, चाइल्ड होटल पता तो होना चाहिए। ऐसा ही एक तुम्हारे बॉडी में क्या लिखना है? यस। सर एक मैंने डेली अपडेट्स करके एक रिपोर्ट्स बनाए हैं आज से। सो उसमें कि गवर्नमेंट इंटरनेशनली क्या इवेंट्स हुए हैं, डोमेस्टिक मतलब क्या गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिया या इंटरनेशनली क्या कुछ हुआ है वो, और क्या जैसे जी सेक्स के क्या यील्ड्स चल रहे हैं वो सब डाला है, और इंडस्ट्री में क्या कुछ अपडेट्स हैं, तो वो भी पोस्ट कर सकता हूँ। क्यों डाले, बट डाले क्यों है? पर्पस सर क्या है? डाल सकते हो तुम, बट सर मैं जनरल पूछूंगा मतलब इंडस्ट्री और क्या कहते हैं, इकोनॉमी अपडेट्स के उससे प्रेजेंट करना। डालने को डाल सकते हो, बट वो एट द एंड तुम घूम फिर के पर्पस आना चाहिए कि तुम कर क्यों रहे ये सब। ठीक है, सर इकोनॉमी और इंडस्ट्री के लिए अपडेट रहे हैं उससे नहीं। बट क्यों कर रहे हो, कि अपडेट का क्या करूं मैं? कि अगर तुम एक फाइनेंस वाले हो तो घूम फिर के इन्वेस्टमेंट पे बात आनी चाहिए। ओके। इन्वेस्टमेंट में आ रही है क्या? ठीक है। डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट देन घूम फिर के इन्वेस्टमेंट में आ रही है क्या बात, वो आना चाहिए तुम्हारे आंसर्स में।
कि डेटा डाल के इसका डेटा का इम्पैक्ट किस तरह होने वाला है इसका। ओके सर, मैं उस अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई करके ना फिर एक बार आपको भेजता है। ओके okay guys, see you tomorrow. Bye bye, have a nice day. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir.